Hello, everyone. We welcome you to the first season and the first episode of Sports Psych Talk, India ka apna sports talk show. Today, we have a very renowned guest with us, Dr. Sonia Kapur. Dr. Sonia Kapur is an assistant professor of sports psychology at MIAS GNDU, Department of Sports Science and Medicine. Ma'am is also a consulting practitioner with the very renowned hospital chain of hospitals, Fortis Healthcare Hospitals. She also consult with various other renowned psychological rehab hospitals in Amritsar. She been associated with the government of Punjab in a de-addiction mission, and she's also a social activist. If I'm not wrong, she is associated with Each One Save One, which conduct the life support activities and train CRPF, Army, Air Force, and various other reputed organizations. Dr. Sonia, we welcome you to our podcast. This is our first initiative, and I'm looking upon you to bless us since you are my mentor as well. And before I begin my first question, ma'am, please, you are working in this field of clinical and sports psychology past 20-25 years. And if you can give, share some highlights of your career with us, with our audience, please. Karan, it's really nice to have you on this particular platform. And I first of all congratulate you for starting this, a very plan that you have decided in your mind to start podcast, through which we can, talk to the rest of the world. So it's really a very good platform and very good initiative. I appreciate you for this and congratulate you too. As you asked me about the the highlights and all, so as Karan, you yourself know that how we come into sports psychology is come into an existence from last 10 to 20 years. You are very much into this field, and we together have seen its ups and the rising level, from a very scratch to this level today. So the first thing which I have found is like, in my journey, what I have done is been, as you know, I have started as a clinical psychologist. I was dealing with the, doing the counseling of the people and with other disorders and all. But when in 2009, I just got a chance to join the sports sciences department. And over there, I have found sports psychology as to be, to teach. So I got very much fascinated towards this field. And then from since 2009 till now, I am working in this field, and it's a really a very novice experience for me in the beginning, and now it's been, you can say that, a very healthy people with whom I'm dealing, and I'm raising their performance and everything. And it's a very good experience, I must say that it's a very healthy field. I must say that the students who are pursuing their psychology, they should plunge into this field now. This is what I must say. Thank you, ma'am, actually for sharing this. I would like to switch to Hindi little bit because हमारे कुछ audience है जो हिंदी जिनको हिंदी में सुनना जिनको आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा. एज मैम, जैसे आपने अभी करियर की कुछ हाइलाइट्स बताई, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के राइज के बारे में आपने बात की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिंस आई रिमेम्बर कि आप एकेडमिकली काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी बच्चे आपने ट्रेन किए हैं, तो जो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसको इंडियन कंटेक्स्ट में आप कैसे देखती हैं? किस कंटेक्स्ट में करण आप पर्टिकुलरली पूछना चाह रहे हो? यस, आई एम आस्किंग इंडियन कंटेक्स्ट में जो अभी जो अपराइज हुआ है उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को आप कैसे देखती हैं? देखो, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप लेंगे तो साइकोलॉजी का कोई बहुत बड़ा बिग बैकग्राउंड या हिस्ट्री नहीं है। ये फ्यू डिकेड्स अगो ही स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर आज की डेट में जब मैंने स्टार्ट किया था तब साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं था। बट अब जो चेंज आया है वो बहुत बड़ा चेंज है, और हम सब एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को अप्रिशिएट भी करते हैं। कोचेस जो हैं वो अपने साथ टीम में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की डिमांड करने लग गए हैं आज की डेट में।
हर एथलीट जानता है कि उसको मेंटल टफनेस, मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो एक बहुत ही बड़ा, यू कैन से, एक फील्ड अपने आप में, एक फील्ड बन गया है इन इंडिया। एंड बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बहुत सारा वर्क कर रही है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, बड़े सेंटर्स खोले हैं, स्पोर्ट्स साइंसेज डिपार्टमेंट खोले हैं, जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को एक मेन डोमेन बनाया गया है। सो आई थिंक इंडिया इज डूइंग टू गुड। क्यों Yes, करण? ma'am. आई Yes, ma'am. होप India यू एग्री विद मी। definitely. Yes, I totally agree. India is really doing really good in the field of sports psychology. Ma'am, I also want to know actually जैसे आपने बोला है कि because you are associated with academics actually काफी टाइम से आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो अभी कुछ बच्चों में ट्रेंड है जैसे वो अब्रॉड जाके पढ़ना पसंद करते हैं। एंड इंडिया में भी काफी पास्ट मैं डेकेड से बात करूंगा, सिंस आई थिंक वी आर द पायनियर इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग द कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन इंडिया। पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर स्पोर्ट्स ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज जो है लॉन्च किए अंडर देयर अम्ब्रेला। और हमारा जो करिकुलम है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमारे जो बडिंग स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी परसू करना चाहते हैं अपने करियर में, उनको समझ में आएगा जो हमारा जो करिकुलम है इंडिया में, और अगर इसको हम कंपेयर करें अब्रॉड के साथ, तो आप इसके बारे में क्या जो एडवाइस है, जो क्या जो इनपुट है वो शेयर करना चाहते हैं बडिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए? हाउ यू कंपेयर दीज टू करिकुलम्स अब्रॉड वर्सेज इंडिया में? देखिए करण, एक तो बहुत क्लियर बात है, जब हमने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वैसे तो हमने ये स्टार्ट कर दिया था इन 2009 में, लेकिन उस टाइम पे म्यास ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का स्पॉन्सरशिप नहीं था हमारे पास। तो हमने एक बहुत ही रूट लेवल पे स्टार्ट किया था, और उसके बाद जैसे जैसे हमने इसको प्रोग्रेस करने की कोशिश की और आगे बढ़ाया, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने रीलॉन्च किया ये कोर्स। हमने बहुत सारा सर्वे किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया फॉरेन यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को, उनको सबको स्टडी किया, और उसमें जो मेजर दिया गया था वो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के ऊपर ही मेजर सब्जेक्ट्स थे एंड ऑल। जब हमने और माइंड मेडिटेशन, मेंटल इमेजरी एंड डेफिनेटली एंड एडवांस टूल्स, तो हमने नो डाउट उन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए, लेकिन उसके साथ जो मेजर चीज रखी, जो हमारा करिकुलम उनसे डिफरेंट होता है, वो है इंडियन सिनेरियो। तो हमने इंडिया के लेवल को दिमाग में रखकर, इंडिया के एथलीट्स को दिमाग में रखकर अपना करिकुलम बनाया, जो कि फॉरेन में एक एक कहते हैं ना, एक दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, तो वो वाला हिसाब है यहाँ पे। यहाँ से बहुत बच्चे बाहर गए, बहुत फैसिनेटेड थे टू डू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बट दे सेड मी कि मैम हमें फॉरेन से करना है। तो आई सेड ओके, यू शुड डेफिनेटली गो। तो जब वो वहां गए तो उनको यही जो वर्ड मैंने अभी बोले कि दूर के ढोल सुहावने, तो उनके कॉल्स आते थे कि मैम वाकई में आप कहते थे हमें कि इंडिया में रह के हमारे साथ करो, आपको ज्यादा बेटर लर्निंग होगा, आपको ज्यादा ज्यादा आप अपने ग्राउंड से जुड़ोगे। तो वाकई में हम यहाँ पर अपने असाइनमेंट्स ही बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें नहीं कुछ भी आउटपुट मिल रहा, या हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, हम आउटपुट अपना दे नहीं पा रहे हैं। तो when they used to ask me about dissertations and all, बहुत से कॉल्स आते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि जब सारा कुछ हमसे ही पूछना है तो फिर वहां क्या कर रहे हो? तो देन दे रश बैक टू इंडिया एंड वांट टू डू द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेयर इन इंडिया। सो मैं सबको बोलूंगी सारे इस चैनल के थ्रू, आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि आप इंडिया में अगर वर्क करना चाहते हो तो इंडिया में ही पढ़ो। आप बाहर से पढ़कर इंडिया में आकर कुछ करेंगे, ये मत सोचिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां के सिस्टम, वहां का सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट, एंड यहाँ से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, आप उसकी रूट लेवल को नहीं समझ पाएंगे। सो प्रेफर टू स्टडी इन इंडिया एंड डेफिनेटली टू वर्क इन इंडिया। सो सेल्फ रिलायंट बनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I hope that व्हाट एल्स? this answer, specifically this answer will clear all the doubts among the mind of the budding students, because there been this all time big confusion around के बाहर से पढ़ना चाहिए इंडिया से पढ़ना चाहिए. I myself an example actually, ma'am. I've been your student, so I'm just trying to highlight myself as well, that how I grown up in India.
Anyways, moving forward, my next question will be around, ma'am, you've been working in sports psychology, clinical psychology, you've been in teaching, practice. This is amazing, actually. It's very difficult for someone to handle so much. How you yourself deal with the challenges which you face every day, ma'am? शायद मुझे तो लगता है मुझे आदत ही पड़ गई है। मुझे कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है करण। इट्स ऑल अ डे टू डे एक्टिविटी एंड आई मैनेज इट। आई डोंट पुट एनी एफर्ट्स इन मैनेजिंग। सी, जिस दिन शोर नहीं होता है, जिस दिन हम कुछ करते नहीं है, उस दिन बोर लगता है। अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आई हैव नॉट एनीथिंग स्पेशल दैट आई शुड टेल कि मैं ये करती हूँ या वो करती हूँ, ना मैं कुछ पर्टिकुलर कोई एक्टिविटीज नहीं है। बस हम रोज ये सोच के चलते हैं कि आज कोई जो भी करें मैक्सिमम अपना द बेस्ट दे सके, वो करें बस। और अपने रूटीन वर्क्स में स्टार्ट हो जाते हैं और डे बाय डे, यू नो मी वेरी वेल करण, दैट मैं कोई प्लान करके नहीं चलती हूँ। मेरा कोई थिंग्स टू डू वाला लिस्ट नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता कब काउंसलिंग के लिए कोई आ जाएगा, कब कोई परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए आ जाएगा, कब कोई डिसर्टेशन वर्क ले आएगा, कब कोई मीटिंग आ जाएगी। नो बड़ी, नथिंग नोज अबाउट फॉर अ डे। सो जैसे कोर चलता है हम उसके साथ कोप करते जाते हैं। हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, बस यही बोलेंगे। Man, what you think about acceptance? I think your acceptance level is quite high in terms of the random things which arrive, at your disposal. That the other person would tell what would be better. You can tell me better than what I personally feel for myself. Man, So आप लोग पेशेंस से बताइए। I have seen you very active, honestly. Actually, my audience should know you're very active. You're very fit also, and you dress up like very nicely. The way Thank you you so appear much, in the Karan. morning, you bring a lot of energy actually, and there is aura around you, which we all have So experienced. I must say that you have a very good observation path. Okay, ma'am. I think this is interesting actually inputs which you have given to our audience. Hopefully, they will like it. Ma'am, further, I want to proceed with the, a bit of this. If you can highlight some success stories, maybe university athletes. I know actually, your students, they are working on ground. Yes, there are few stories, but yes, to maintain their confidentiality, I will not reveal the names and Sure, sure, ma'am. the Sure. sports. One shooter was there with me in the, when my students were working with that, in the fields. Is as I must tell you that in the curriculum, we have field postings from the day one in this course. And we give a free hand to the students to perform with them and to, work with them. And some students of mine came to me that there was one issue with the shooter, that could not able to focus or to target on the right point, in spite of lot of training being provided by the coach and everything. Even coach was very upset that why this this shooter could not able to hit the target, in whether otherwise she was being checked on all the exercise, exercise physiology stream has checked all the his parameters and his agility, his all the parameters of the body. Physical strength was there, endurance was there, everything was good. But what was an issue, why she could not able to? Then my students also indulged with that, that might be there would be some mental hurdle or something, but that was also not been they detected. And they were just discussing with me one day. I said, okay, you ask her to let's plan to meet. So I had one meeting with that player, and I asked her to come to my lab because we were using eye tracker at that moment. So I have that instrument in my lab. So on eye tracker, when I checked her, I found that she was far away looking from that target. Though she was looking in the gun, but the she was not looking on the target from through that gun. So it was a very shocking for me that how she could hit the target if she was looking far away. And this eye tracker had given me the result. And then I asked her to to fix her vision on my hand. And when she looked here, then I put the finger in front of, and my hand palm on in front of that gun. And then I asked her to focus and took her towards the target. Then we realized that she was looking on the wrong hole on the gun.
There were two holes, upper and the lower. So she was looking on the wrong hole, and that's why the target was not up to the mark. And this was, we were, really, we could able to find out the reason, and then we shared this with the coach, and coach was really, felt like, oh my god, this was the mistake. And then he told that how she has to maintain, how, where she has to look into the gun and where to target. And that was been simply rectified that issue. This was one of the successful story, and she definitely won the gold medal also. And this was the first, you can say, that the successful story on basis of which we can say that eye tracker, and we recommended eye tracker to many people after that, to all the shooters, to archers, that they should get assessment through eye tracker. So this is one thing which we have done, Karan. And there are two more. There are fencers also who used to come, and at that time they were being in a, in a issue like how they should perform at that time when there was a, they were losing the points. So they get, nervous that what next to be done, and their scoreboard is disturbing them. And then we, how we had to manage that. So a lot of, the counselings were being done, and when they were being taught about that, to focus on their performance and not on the scoreboard, how to distract themselves from those things, and they have not to, look into it, how they have to block their, vision. So this all things have been, given them counselings, and they were successful. Now they all were winning gold medal, silver medal, and they were not coming without any medal. And that even our Guru Nanak Dev University have proved through Maka Trophy winning 25th time. So we were very delighted to see their, winning faces. It's a wonderful experience. Man, thank you for sharing such a wonderful story. Actually, I have just seen Dr. Jaspal Singh Sandhu, taking, that receiving that trophy from He is the current, President Draupadi Murmu. Yes. he is himself is so much passionate towards sports. He is the only person who has started this, sports psychology in GNDU. And over here he is the actually being the, the backbone of this full sports sciences in Guru Nanak Dev University. So our worthy Vice Chancellor has given us a privilege. We are working under his, supervision, and lot of facilities being provided to athletes. He has gone through all the, the problems of the athletes and what are the facilities are required. He know the roots, of the sports fraternity, and he's working on that very wonderfully, and we got very good results out of that. So definitely all efforts are him only, and we are working with his guidelines. Those who don't know Dr. Jaspal Singh Sandhu, for my audience, I just want to add that he himself a sports medicine specialist, and he's the VC Vice Chancellor at Guru Nanak Dev University. He actually, rose that department of sports science and medicine. I'll say he must, like, he's the one who laid the first brick of that department. So big applause for Dr. Jaspal Singh Sandhu, VC. I myself been his student actually, so I'm taking so much proud. करण, इनको explain करने के लिए words कम पड़ जाएंगे, because he is such a big personality that it is very difficult to summarize his whole story in one or two lines. तो उन्होंने बहुत काम किया है, उनका काम जो है वो विजिबल है, वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, और उनके काम बोलते हैं. It's not just in words what he says. He did work on those all things, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं. So this is his, what we can say. बिल्कुल मैम. मैम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम हिंदी में थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए, ताकि एक इंग्लिश काइंड ऑफ पॉडकास्ट उनको मिले. मैम एक्चुअली देयर इज क्वाइट हाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. रिसेंटली हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी काफी आ गई. आपने भी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया अपनी स्टोरी में, कैसे आपने आई ट्रैकर को यूज किया टू help the one of the shooters to improve the performance.
डेफिनेटली माका ट्रॉफी जो है, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती, उससे ये प्रूव होता है कि उनके यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कितने मेडल आए होंगे। तो आपके शूटर्स ने डेफिनेटली मेडल जीते होंगे। अपार्ट फ्रॉम आई ट्रैकर, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो आप टेक्नोलॉजी को लेके आप क्या सोचते हैं? अभी जैसे वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है। मशीन लर्निंग, लुकिंग पीपल लुकिंग एट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन अ वेरी बिग वे to identify the talent in sports. Or apart from that, potential computerized based assessment platforms are there, computerized based training platforms are there. Quite other technology which came coming to my mind, जैसे sensory motor skill assessment stations आ गए हैं। कुछ तो कुछ लोग ईईजी और ईएमजी को कंबाइन करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये काफी एब्सोल्यूट है या फिर ये असिस्टिव है? देखो करण, एक जहां तक बात है टूल्स की, तो बहुत ज्यादा रिलायबल है। जब हम टूल्स यूज करते हैं उसका बेस्ट बेनिफिट यही आता है कि आपकी सब्जेक्टिविटी और आपके जो ह्यूमन एरर्स हैं वो निकल जाती हैं। जो हम एज एन एक्सपेरिमेंटर एरर कर जाते थे, वो जब हम टूल पे वर्क करते हैं तो वो एरर्स नहीं होती। उसकी पूरी डाटा रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज बीन माइन्यूट टू माइन्यूट। इवन आपने आई ट्रैकर देखा है, उसमें इवन सेकेंड्स में उसकी रीडिंग्स नोट हो जाती हैं, जो कि एक ह्यूमन पर्सन के, एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसको नोट करना इज नॉट पॉसिबल। सो वो जो हमें माइन्यूट माइन्यूट रीडिंग्स मिलती हैं वो एडवांस टूल्स ही हैं जो करके देते हैं, और हम उसके बेसिस पे अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं। रिसर्चेस में बहुत बढ़िया यूज होते हैं एडवांस टूल्स, और हम उनको फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे रिकमेंड करते हैं ऑन द प्लेयर्स। So I will definitely recommend the advanced tools which have been coming, whether it is which virtual reality, whether it has been VTS, whether it has been latest biofeedback with many, the bits. So everything is been going in an advancement, and it is definitely been used. VTS में जो sport specific test आए हैं नए, बहुत ही अच्छे हैं, और उसके ऊपर एनालिसिस करके एथलीट्स का हम और बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करने में जो ये टूल्स हैं ये ज्यादा बेटर वर्क करते हैं। मैम, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, आपको माइन्यूट डिटेल्स मिल जाती हैं टेक्नोलॉजी से। तो इसके कंपैरिजन में, जैसे जो फोकलोर, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो इंटरवेंशंस हैं, वी कॉल देम, देयर इज अ क्राइटेरिया आल्सो मेंशन इन द बुक कि कौन सी आपकी एविडेंस बेस्ड एम्पिरिकल जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरवेंशंस हैं, जिसमें एमएसटी और पीएसटी की जो इंटरवेंशंस आती हैं। प्लस वी आल्सो टॉक अबाउट माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट और वीबीएमआर, XYZ। देयर आर एन नंबर ऑफ इंटरवेंशंस, those who are actually empirically quite established, some of them are not really established। तो इसके बारे में आप how you compare basically, like it is always good to combine these two, कि हम conventional methods को भी यूज कर रहे हैं प्लस टेक्नोलॉजी का हेल्प भी ले रहे हैं। देखिए जो दोनों टूल्स, दोनों एडवांस टेक्नोलॉजी अलोंग विद दैट, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को जो मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगी कि इम्प्लाई सही करिए। इम्प्लीमेंटेशन बड़े लोग हैं जो उसको एप्लीकेबल करते वक्त बहुत सारी राइट एंगल से नहीं कर पाते हैं, और एथलीट भी जो है, जो सामने जिनको आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो उस लेवल पे नहीं करते। इसीलिए मैं एडवांस टूल्स को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें हमें पता लग रहा होता है कि क्या कोई कर रहा है और कैसे कर रहा है। उसके रीडिंग्स हमें साथ साथ मिलती हैं। अब मैं अगर किसी को मेंटल इमेजरी करा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, पर मुझे नहीं ना पता वो अपने दिमाग में कोई और ही इमेजिनेशन कर रहा है। आप समझ रहे हो? सो वो जो हमारी एक एरर्स हैं, ये नॉट एबल टू कैलकुलेट, तो इसलिए इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये पता नहीं लगती है, इसलिए एरर्स ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप सीरियस नोट पे कोई सच में उसको एक फोकस करके अपनी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन करता है, या माइंडफुलनेस करने आता है, या मेंटल इमेजरी करता है, तो उसके लिए उसको फोकस बनाना और एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक विल टू डू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जब टीम के साथ वर्क करते हैं तो सबको बिठा देते हैं ग्रुप में और कहते हैं चलो जी मेडिटेशन एंड मेंटल इमेजरी। उसमें से आधे लोग तो सो रहे होते हैं, आधे लोग सोचते हैं कि लेट टेक अ रेस्ट, यही मिल गया टाइम, बट नो बडी इज सीरियसली डूइंग इट। तो कोई मजा नहीं आता है उसमें, आपको आउटपुट नहीं आएगा। सो वर्क कंडीशंस, और आप चाहे थोड़ा काम करें बट अच्छा करें, उसके लिए आप पहले वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। सो मोटिवेशनल क्लाइमेट हो जिसमें कि सारे काम करें और फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करें, तब ये दोनों टेक्निक्स काम करेंगी। वरना
जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते क्योंकि एक ट्रेडिशनल मेथड कहीं ना कहीं सही तरीके से अप्लाई नहीं होता। अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड्स आर द बेस ऑफ दीज ऑल टेक्नोलॉजीज। तो वो जो बेस है वो अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा है अगर सीरियस नोट पे उसको इम्प्लाई किया जाए। Ma'am, we are just heading toward the end of this show. I'll ask you a couple of the questions with the expectation of brief answer. Ma'am, we will. I want to ask you a little bit about the mental well-being or mental health of the athlete. इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेंटल वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए, और क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो they are being trained on handling the mental health issues of the athlete, since you are a clinical psychologist, so you can better tell about it. देखिए, मेंटल हेल्थ की जगह पे मैं इसको साइकोलॉजिकल वेलबींग ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकली बिल्कुल फिट है, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड ऑन ऑल द ग्राउंड्स, इफ वी आर बीइंग वेल, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है, जिसमें हम अपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, हम उसको कोपिंग अच्छी कर लेते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी है और मेरी सेल्फ स्टीम अच्छी है, जब हम ये सारी चीजें अपने आप को एक अच्छे लेवल पे एक अपनी पर्सनालिटी के साथ मैच करके उसको अप्लाई करते हैं, तो हमारी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी बहुत डिपेंड करती है। अगर ये सारी चीजें हमारी मिलकर पॉजिटिव वे में चलेंगी तो नो डाउट the person will be able to perform in a much better way. It is not only in the games, it's in all over life too. But अगर हमारा psychological well-being ही अच्छा नहीं है, अगर अंदर से ही मैं वीक हूँ, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर पुअर हो रही है, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मेरे को कोपिंग करने में मुश्किल आ रही है, मेरा बिहेवियर एब्रप्ट है, तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे डोमेन्स जो हैं वो सही काम नहीं करेंगे। चाहे मैं इकोनॉमिकली कितनी भी अच्छी हूँ, चाहे मैं पॉलिटिकली स्ट्रांग हूँ, चाहे मैं सोशलाइज बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन अगर मेरा इंटरनल कोर, टिपिकल कोर मेरा इंटरनल नहीं सही है, मेरा साइकोलॉजिकल डोमेन सही नहीं है, तो मैं किसी भी फील्ड को वेल यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, द फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू यूटिलाइज रेस्ट ऑल द डोमेन्स, first of all you become psychologically strong. So psychological well-being is utmost to be kept at the highest priority. Absolutely, ma'am. We have seen this, such a slap from the COVID-19 actually. किस तरह से मार पड़ी COVID-19 की, और मेंटल हेल्थ बिल्कुल एकदम से गड़बड़ा गई एथलीट्स की भी. आई माई सेल्फ एट दैट टाइम एड्रेसिंग कपल ऑफ द एथलीट्स, बहुत चैलेंजिंग टाइम था. somehow India, I think, stood out and अच्छे से कोप अप किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमने वैक्सीन भी सब बाकी सब देशों को भी प्रोवाइड की. मैम करण, ये लास्ट तो में. कहना ही पड़ेगा, करण ये तो कहना ही पड़ेगा कि इंडिया हर फील्ड में, सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वी आर स्ट्रांग. वी हैव टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ. We should believe on our abilities and ourself, actually, being such a diverse country. Ma'am, last में I just want you to say a few words for our upcoming generation, those who are looking up to sports psychology, and देखिए, those who want to अपकमिंग pursue the जनरेशन, career. हाँ, अपकमिंग जनरेशन को तो करण 100% मैं यही सजेशन दूंगी कि आप इस फील्ड में प्लंज करिए। चाहे आपने एमए साइकोलॉजी किया है, चाहे आपने, देखिए हमारे टाइम पे सिर्फ एमए साइकोलॉजी होता था, उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड्स नहीं होती थी। बट अब ये गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर द अपकमिंग जनरेशन की एक्सपर्टीज आ गई है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अगर आप प्लंज करते हैं तो आप एक उसमें एक एक्सपर्टीज गेन करते हैं। आप इसका मतलब ये नहीं है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किया है तो आप काउंसलिंग नहीं करेंगे या आप हॉस्पिटल, एवरीथिंग यू कैन गो फॉर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काउंसलिंग में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं। सो इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, तो इन एवरी फील्ड यू कैन गो, बट येस, by doing sports psychologist you become the expertise of this. And जितनी भी स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं उसमें मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी would be considered as an eligibility for getting a job. So
मैं तो हर अपकमिंग साइकोलॉजिस्ट को बोलूंगी कि अपना जहां पर भी हिंदुस्तान में काम कर रहे हो जम के करो। आने वाला टाइम बहुत ही राइजिंग टाइम है फॉर यू, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट होगी, बहुत ज्यादा प्लेसमेंट है। सो एवरीथिंग इज बीन फुल पैक। सो यू विदाउट लूजिंग हार्ट और विदाउट थिंकिंग दैट एट अ कि बाहर बहुत अच्छा है और यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम वो सब कुछ हो रहा है जो शायद बाहर भी नहीं होगा। और बहुत से अपकमिंग टाइम में आप देखेंगे कि बाहर की यूनिवर्सिटीज के बच्चे यहाँ करने आएंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि आपको पता है तो आप सोच सकते हो कि वो मेंटली कितने टफ हैं। सो आई सल्यूट माय ऑल इंडियन एथलीट्स एंड टू देयर स्ट्रेंथ, and we are there always on their back and keep on pushing them towards the winning these medals. So wish all of them a very very good luck, and definitely sports psychology will boom in upcoming time. वेल मैम, अभी शो समाप्त करने का समय आ गया। एक्चुअली हमारा पहला पॉडकास्ट था। आई होप ऑडियंस इसको लाइक करेगी। कुछ कुछ चीजें मुझे भी समझ में आ रही हैं, शायद फर्दर हम फ्यूचर में इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, ऑल दी कोचेज, एथलीट्स एंड साइकोलॉजिस्ट जो भी स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें काफ़ी सपोर्ट हो आपसे और हम अपने पॉडकास्ट को और आगे लेके जाएं और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करें। एंड वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर ओपनिंग एपिसोड ऑफ द सीजन 1 and sharing such knowledge actually, and the inputs, insights about your career as well, about sports psychology as well, with our audience. Once again, thank you so Thank you, much. Karan. Thank you. And I'm really appreciating once again to you and congratulate you for giving us this platform. And I wish you a great success in upcoming endeavors. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Bye bye, ma'am.